And I was so grateful to God कि अल्लाह ताला ने हमारी एक complete family life दी है. And there are people and children around us who don't have this privilege. Assalamu alaikum. My name is Saba Faisal and I am the National Director of SOS Children Villages, Pakistan. सबसे पहले मैं आज DeafTawks की वंडरफुल टीम का थैंक करना चाहूँगी. उन्होंने मुझे एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया आके आप सब से, हमारी जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स जिन्होंने आज ट्यून इन किया है, उनको अपनी जर्नी का बताना और क्या कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या वंडरफुल काम कर रही है और उसके बारे में थोड़ा सा आप सबको बताना. सबसे पहले सबा फैसल कौन है? आई बिलोंग टू लाहौर. आई वॉज बॉर्न हेयर. आई एम द एल्डेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स. मेरी स्कूलिंग लाहौर से हुई इन अ कॉन्वेंट स्कूल. देन आई वेंट ऑन टू कनेट कॉलेज फॉर माई ग्रेजुएशन. Then I got an opportunity to do my master's in business administration from Qaid-e-Azam University. And after that, I got married before I could join the workforce. My husband is a physician, so we traveled to the US for his fellowship and his training. We came back in 1995. और उसके बाद because my kids were younger, I thought that I should wait to enter into workforce. जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए, because I wanted कि मेरा जो formation years हैं उसमें उनके साथ एक राब्ता रहे. So once they got a bit older and they entered school, I also started working with a leading child school like an educational institute in Lahore. And I was with them for 19 years. That's a long time. You know, जो कहते हैं कि आप सब की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी आ गई है और आप कुछ अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं. So 19 years is a long time to be in the same job. I stayed with them because it was a safe option. I am not a very risk-taking person. So when I think it was 2016 ka December, I thought that I wanted to push myself a bit. So a mutual friend told me about this position, and I told her that हो ही नहीं सकता, मेरा कोई NGO सेक्टर में एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कैसे ये जॉब करूँगी. एंड शी encouraged me. She said, CV तो भेजो. So I sent my CV over and I was immediately called for an interview by the president of SOS Children Villages Pakistan, Mrs. Suraya Anwar. And this was in December of 2016, I remember. And I think abhi main gaadi mein baith ke, I had not even reached home. They had called me and they said, you are the right person and we want you to join us immediately. And I was, of course, very, very happy. But I was very apprehensive also because I had not done this kind of job ever. I had always been associated with a private organization और मेरा कोई experience नहीं था. I asked the president, I called her back, I said, देखिए मेरा कोई experience नहीं है. She said, you are the right person. Just believe in yourself. So I sort of consulted my family, my husband, who was my continuous support and still is my continuous support, and my children. I have 2 grown-up boys, mashallah. They also encouraged me, and I landed with the SOS Children Villages, Pakistan. During my 19 years of association with the Educational Institute, I also completed my master's in Human Resource Management. Side by side, juggling my job, my children, my home, as well as the master's. So I was able to manage that, and I joined SOS Children Villages Pakistan in January of 2017.
शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज अ बिट टेकन अबैक बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, जब मैंने जो हमारे केयर में बच्चे हैं उनकी जो स्टोरी सुनी, मुझे आई वुड कम होम वेरी अपसेट एंड आई वुड cry. First week, I remember that was what I would do. And I just could not fathom and I was so grateful to God कि Allah Ta'ala ने हमारी एक complete family life दी है. And there are people and children around us who don't have this privilege. So again, I got the support of my president, my board, and of course my family. You know, you can do this. You are the one God has chosen to take this journey forward. So I started working towards this. A little bit about what SOS is doing. So SOS Children Villages Pakistan is the leading child welfare organization in the country, and we are a member association of SOS International, जो कि जिनका हेड ऑफिस ऑस्ट्रिया में है. It was founded by a philanthropist, Austrian person by the name of Hermann Gmeiner, who after the Second World War saw there were a lot of orphan children who had nobody to care for them. So he came up with literally handful of 3 or 4 friends, like-minded individuals, who thought that they should start this organization and to provide a loving home to these children. So the first SOS International was built in 1949 in Imst, Austria. In Pakistan, we started our journey in 1975. When our founder, President Mrs. Suraya Anwar, thought of this brilliant idea, and of course she had like-minded individuals and friends along with her who comprised of her board of governors. Now these are all volunteer members who have been serving SOS for a long time, over 40 years now. Our first village was built in Lahore in 1977, I think. And from that day onwards, there's been no looking back. हम अब माशाल्लाह 60 हमारे projects all over Pakistan हैं, in 17 cities. SOS villages हैं हमारे, villages के साथ हमारे youth homes हैं जिधर हमारे older लड़के परवरिश पा रहे हैं. फिर SOS Hermann Minor schools हैं जिसमें हमारे अपने बच्चे तो होते ही हैं, but community के बच्चे हैं जो आते हैं, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के बच्चे. उसके अलावा वी हैव टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स. सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स कंप्राइज ऑफ आवर 60 प्रोजेक्ट्स विद इन द कंट्री. 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम गवर्न करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारा मदर्स. हमारी एक मदर होती है जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड होती है, जिसकी परवरिश में 8 से 10 बच्चे होते हैं हु आर ऑर्फन और अबैंडन्ड, हमारे पास आते हैं. फिर हमारे पास इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दे लिव इन हार्मनी विद इन दैट हाउस, लाइक यू नो आवर हाउस. हमारे बच्चे जैसे एक घर में ग्रो अप कर रहे होते हैं. उसके बाद ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट और द प्रिंसिपल ऑफ अ होम एंड द विलेज, द कम्युनिटी. सो एक टिपिकल विलेज में अबाउट 10 to 15 होम्स होते हैं जिसमें सारे बच्चे इंडिविजुअल यूनिट्स में रहते हैं और एक होमली एटमॉस्फेयर होता है. हमारा यूनिक प्रिंसिपल ये है कि हम अपने इदारे को ऑर्फनेज नहीं कहते, हम अपने इदारे को एक लविंग होम कहते हैं, बिकॉज वी हेल्प these children, these underprivileged, abandoned, orphan children to build happy memories within the setup. हमारा एम यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके जितने भी इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर सर्व्ड, अबैंडन्ड, ऑर्फन बच्चे हैं वो हमारी केयर में आएँ, हम उनको एक बेहतर मुस्तकबिल दें. एवर सिंस आई जॉइंड SOS बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने स्ट्रीमलाइन की हैं. ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स वर ऑलवेज देयर, बट एवर सिंस आई जॉइन मेरी जो कंट्रीब्यूशन है कि हमारा बहुत अच्छा लिएज़ॉन विद आवर इंटरनेशनल ऑफिस है, बिकॉज 2 चीज़ों पे हम बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते. एक ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है,
और दूसरा चाइल्ड सेफ गार्डिंग है, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने बच्चे आपकी केयर में हैं और वी हैव टू इंश्योर कि वो प्रॉपर तरीके से उनकी सेफ गार्डिंग हो रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो रही है, उनको कोई फिज़िकल, कोई मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन किया है मैंने। बहुत सारे यूथ के लिए अब हम काम कर रहे हैं। मुझे याद है हमारी पहली यूथ कॉन्फ्रेंस 2018 में इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें हम अपने जितने भी बड़े बच्चे और बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम टू आस्क देम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर विद इन द इंस्टीट्यूट, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड्स हैं, और उनकी नीड्स के मुताबिक हमने प्रोग्राम्स को गेयर किया। सो बहुत सारी चेंजेस, इनोवेशंस आ रही हैं। डिजिटलाइज हमने किया है जब से मैंने ज्वाइन किया है, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर। हमारा इदारा जो है वो कम्प्लीटली डोनर ड्रिवन इदारा है। आप सब मिलजुल के इस इदारे को चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन ब्लेस्ड कि हम कम्प्लीटली पाकिस्तान के जो हमारे डोनर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग सारे हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।